जाती है, सिमरन करते चले चलो तो मंजिल खुद मिल जाती है। किरपाल यही संदेश देता, हमें यही सिखलाती है, सिमरन करते चले चलो तो मंजिल खुद मिल जाती है। आपको तो बाबा जी सारा ही मालूम है। मेरे से बुलाने का आपको हुक्म है, आप ही बुलाएंगे जो बोलूँगा। आपकी दया से बोलूँगा। दिख रहे तो आपको ज़्यादा जानकारी है। आपको सब मालूम है बाबा जी। ठीक है, चलो जो हुक्म आपका। बताइए, संगत को मालूम होगा बाबा जी ने कितना तकलीफ उठाया। बाबा जी आप पहले बाबा जी भी ब्याह जाते थे, हम भी ब्याह गए, नाम लेके आए। संगत ने हमारे गांव से 2 बच्चे जाती थी। उन्होंने बताया कि आप नाम ले आए हो और संत सत्संग करते हैं पुण्य चक्र में, तो आप चलो। तो हम साइकिल से जाते थे वहाँ, साधन तो नहीं थे, कच्चा रास्ते होते थे, तो हम साइकिल से हम भी चले गए। बाबा जी को 2 शब्द का सब भेद था, वो सत्संग करते थे, काफ़ी संगत आती थी। मंथली सत्संग होता, उसमें तो 5-6 हज़ार संगत इकट्ठी हो जाती थी। तो मेरी पहली मुलाकात बाबा जी से हुई। संगत सब चली गई, 10-15 प्रेमी रह गए। वो बैटरी थी ना स्पीकर वाली, उसको चार्ज करने के लिए साइकिल से गंगानगर जाना पड़ता था। तो बाबा जी ने बोला 10-15 प्रेमी रह गए, तो ये बैटरी चार्ज कौन करा के लाएगा? कोई नहीं बोला, क्योंकि रास्ता कच्चा था, मेहनत काफी होती थी। ये बोले हाँ जी, ट्रांसलेट करेंगे मतलब सब। हाँ। So let me introduce you to Ramsingh ji. He was a Sevadar with Sanji, very close Sevadar of Sanji. So Babaji thought it fit to ask him to speak a few words and talk about his seva and about how Sanji lived and about that episode when Kirpal Singh ji came. So that Harpansi has been so kind to share with us. So Harpansi got initiated in Bias, and they used to go. They had about 2 buses, and those people would go get initiation in Bias and come. So once he was initiated, December 1970. Initiated in December 66. Around 1966. मैं बाबा जी को मिला 67 में, जनवरी 67। So in those days, Sanji had initiation of 2 words. He had not been initiated by Kirpal at that point. So he had the name of 2 words, and he would do satsangs. So there were thousands of people who would come and attend his satsangs. So when Harpansi got initiated in Vyas, people suggested that he should go to Sanji and listen to his satsangs also. So he went on his bicycle. तो Harpansi आप कितने दूर रहते थे संजी के पास से? 5-6 किलोमीटर. About 6 kilometers. He took his bicycle and he went to Sanji's place to listen to the satsang. And after he listened, there were about 10 or 12 people left. And Sanji would speak on the loudspeaker, and there was the charge of that was a battery.
So there was no electricity in those days. So everything was working on those batteries. It was quite a heavy battery. So Sanji asked the Sevadars that now this battery charge is gone, so who is going to go and charge? This was the first time that Harpansi attended that satsang. So everyone was quiet, because to charge the battery one had to take the battery to Ganganagar, which was very far off, and charge and bring it back on a bicycle. मैंने बाबा जी को बोला कि मैं बैटरी चार्ज करा के लाऊंगा। बाबा जी मुझे बोले मैं तो तुम्हें जानता नहीं हूँ, आप मेरी बैटरी भेज जाओ। So Harpansi offered to do that seva because everyone else was quiet. He said, I will charge your battery and come. But Sanji told him that I don't know you. What if you run away with my battery? तब जो हमारे गांव के आदमी थे, प्रेमी थे, वो हमें मेरे दादाजी को जानते थे। बाबा जी ने एक दफ़ा हमारे पिछले गांव 100 किलोमीटर दूर पंजाब में था, वहाँ सत्संग किया था हमारे घर में दादाजी के। तो वो बोलते हैं ये कि मेरे दादा का नाम था केयर सिंह, ये बाबा जी के केयर सिंह का पोता है। तो बाबा जी बोले ये तो फिर तो अपना ही लड़का है, फिर ठीक है आप ले जाओ। So then someone else in that Sangha, his grandfather was in Punjab and Sanji had gone, his name was Keher Singh, and Sanji had done a satsang at his house. So then someone introduced him and said that he is the grandson of Keher Singh. So then Sanji said, oh, then he is a family man, so that's okay, he can take the battery for charging. उस दिन से बाबा जी से मुलाकात हुई, हम ना बाबा जी को छोड़ सके ना हमने बाबा जी को छोड़ा। तो इतना प्यार बढ़ गया कि मैं बाबा जी के साथ ही रहने लगा। So after that, I had so much love for Babaji that I became his, and I was completely. Umar kya thi tabhi? 21 years. So he was around 21 years then. हम भी 21 years में गए थे बाबा जी के पास। तो ये कृपाल सिंह जी आए संजी के पास, तो वो क्या पूरा जरा किस्सा सुनाइए। हम वही थे जब महाराज कृपाल वहाँ आए, हम वही थे। अरे महाराज ने सत्संग लिया, जिनको भेजे नहीं लगाए बुलाए। अरे वो सत्संग बाबा जी ने दिया, वो शायद गति करा हो। हाँ वो बात बाद में, हाँ वो पहले वो हबोर वाली पहले बताएं। एक प्रेमी था बाबा जी का पड़ोसी, उसने हबोर में बाबा जी महाराज कृपाल के चलती कार पर दर्शन किए, तो उसको आंखों में वो स्वरूप बैठ गया, तो महाराज ने दिखा दिया। वो बाबा जी के पास आया, बोलने लगा जी एक मैंने अस्थि देखी है, वो आदमी नहीं था, वो कोई नूरी ताकत थी, मेरे आंखों में उसकी शक्ल जो है दूर नहीं हो रही, तो वो अभी भी मेरे आंखों में है, तो वो मुझे मिला। तो उसने वो पहले नशा पता करता था, उसने वो छोड़ दिया, तो बाबा जी के पास रहने लगा। फिर वो 5-6 महीने बाद फसल काट रहा था बाबा जी की, तो उसको महाराज लेने आ गए। वो कहते उसको उल्टी आई, थोड़ा घबराहट आया, तो प्रेमियों ने बाबा जी को बताया कि हरनाम सिंह है, वो उल्टी आई है और उसको घबराहट आई है। तो बाबा जी भाग के उसके पास गए, वो बोला भी वो शक्ति जो मुझे दिखाई दी थी ना, वो मुझे लेने आ गई हवाई जहाज पर। तो आपके पास 1 साल बाद आएंगे। So there was a neighbor of Sanji. He was staying close by, and he used to he had a lot of respect for Sanji. So once he was traveling and he was in Abohar, which is at a distance from where Sanji was staying in those days. And in Abohar, he saw Kirpal Singh Ji in a passing vehicle. So even the vehicle did not stop. The vehicle just passed by, and he came and told Sanji. उनका नाम क्या था? दूसरा एक सिख ने देखा। हाँ वही है, वही है। हरनाम सिंह. His name was Ramsingh. So he came and told Sanji that I saw
a power in the car. I saw a great power. He was not a human being. It was a very power of high order. He had got just that experience. He was not an initiate. He used to drink, and he was not following Sant Path at that time. So thereafter, after that experience, Ramsingh left drinking and he left all of that. And he used to come to do seva in the ashram. So after about 5-6 months, once on the field, Kirpal Singh Ji came to take him because that was the end of his time. And he was cutting grass when he got a vomit and he felt a little scared. And he sent message. So the people, other sevadars came and told Sanji. And Sanji went to see what happened. So when Sanji went to Harnam Singh told him that that same power which I had told you about, that has come to take me on a plane. That power has brought a plane and it is going to take my soul. और 1 साल के बाद में आपसे मिलेगा. And after 1 year, that power is going to come and visit your ashram. He is going to come to you. 1 साल बाद महाराज के पास उधर आए, तो मैं भी उधर ही था. हमने 2 शब्द बोले महाराज के आगे. एक तो बोला नादरे मन नादरे वाला, एक मैं सतगुरु प्रीतम प्यारा मैं भूल की नाम तुम्हारा. महाराज साहब बोलते थे ऐसे भी करते. So Kirpal Singh Ji visited after 1 year, and I was also there when he first visited, and I sang 2 bhajans, नाच रे मन नाच रे. I sang that bhajan and दूसरा कौन सा क्या? मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा. And Kirpal Singh Ji listened very intently to the bhajans, and he also was gesturing by his hand, so he was very happy with the bhajans. बाबा जी को महाराज ने बोला भी ऊपर चढ़ के आपकी जमीन दिखाओ, आपका मकान दिखाओ. महाराज ऊपर चढ़ गए, सारा देख के भी महाराज ने बताया कि एक मरबा तो मेरा इधर 25 बीघा है, एक अमर पास है. तो मकान देख के बाबा जी को महाराज बोले कि मकान तो आपका बहुत अच्छा है, परंतु आप इसको छोड़ दो, 16 बीघे जाके भजन करो. इसको इससे यहाँ से कुछ नहीं उठाना है. So when Kirpal Singh Ji Maharaj came there, he asked Sanji to show him the place, and there was a vast land parcel that this ashram was built on. So Sanji took him to the higher floors. It was a 2-storied, 3 male ki building, 3-storied house. So they went to the terrace, and from the terrace Sanji showed him the extent of land. So there were 25 acres of land around that ashram, and at a slight distance there was another 25 acres. So Sanji showed him all of that, and after seeing all that, Kirpal Singh Ji said that you have to leave all of this, don't carry anything, and you have to go to 16 PS and do your bhajan simran and leave this place as it is. उसके पहले की थोड़ी सटोरी बताता हूँ. बाबा जी के पास मैं रहता था ना, तो बाबा जी जब संगत चली जाती थी तो 3 बीवियाँ थी खाना बनाने के लिए. बाबा जी 2 तो बेटियाँ थी और एक बड़ी उम्र की थी, उसको बाबा जी माता कहते थे. तो वो बारी से खाना बनाती थी बाबा जी. बाबा जी मतलब के पास गाय भैंस थी, दूध थी, आम था. बाबा जी सब्जी में घी नहीं चाहते थे, परंतु वो जबरदस्ती थोड़ा ज़्यादा घी डाल देती थी क्योंकि हम बाद में खाएंगे. तो बाबा जी उनसे परेशान थे. So I will tell you a little bit about my seva. So there were 3 ladies who were doing seva of the kitchen of Sanji. There was one elderly lady whom even Sanji called Mata, and there were 2 younger girls. So the 3 of them would do seva, cook food for Sanji and give and for the rest of us. So Sanji did not like too much oil being put or too much ghee being put in the food. But then these 3 liked it, so they would put a little more ghee and they would prepare. And Sanji, felt that there's too much ghee in the food. And so that is how the seva was going on. वो मुझे अंदर किचन में नहीं घुसने देती थी.
क्योंकि ये हमारे पेट में लात यही मारेगा। तो एक दफा बाबा जी वह गाँव में एक हफ्ते के सत्संग लगातार किया करते थे। एक दफा हम बाबा जी के सत्संग करके आश्रम में आए। हम 3 ही आदमी थे, मैं था, बाबा जी और एक मेल का पिता जीत सिंह। बाबा जी मुझे बोले कि आप खाना पकाना सीख लो, उनका इस वीडियो से हमारा आज़ादी हो गई। तो बाबा जी सामने खड़ के मुझे वो खाने पकाने की ट्रेनिंग बाबा जी ने दी। मैं बैठ के खाना पकाने के लिए तैयार हो गया। बाबा जी मेरे मुंह से ये निकला, मैं तो बाबा जी माता बन गया। तो बाबा जी बोले भी अब अजीत से इसको माता ही कहना, हमारे खाना बना के दे। तो बाद में मैंने बाबा जी का खाना बनाया लगातार उधर ही। वो उस वीडियो को बाबा जी जब सत्संग होता ना तब बोलते भी अब हमारे बंदा तैयार हो गया है, हम आप जाओ घर। So these 3 ladies were cooking the food. Then Sanji, they would not allow me to enter because they felt that I am going to take their seva somehow. So they never allowed me to enter the kitchen. Now it so happened that once we all went for satsangs, Babaji would go to different villages for 7 days, 10 days. So like that we went for 7 days outside and returned. And when we returned, only 3 of us were there. Sanji was there, I was there, and Gurmail ji's father, Ajit Singh, was there. So only 3 of us were there. So then Sanji told me that you cook the food. And then I started cooking there in front of him. And he stood there throughout me cooking so that he would give his attention to me. And he taught me how to cook. And then he said, okay, now we will call you Mata. he said for you that now you have replaced, you have got us rid of that seva. So now you are Mata for us. उसके बाद में लगातार यही चलता रहा। महाराज ने बाबा जी को कहा था कि ये जगह छोड़ दे, तो मुझे दुख की घड़ी आई है। जब बाबा जी वहाँ से जाने से पहले मुझे उन्होंने 5 मिनट तक गुरु नानक का स्वरूप बनाकर दर्शन दिया और मुझे बोला भी आप अब घर चले जाओ। तो मैं अब आपको नहीं मिलूंगा कई दिनों तक, क्योंकि महाराज ने थोड़ा छोड़ना था। तो मेरे लिए वो मैंने बोला बाबा जी को मैं तो मरना मंजूर है, घर नहीं जाऊंगा। बाबा जी ने मुझे विश्वास दिलाया कि मेरा प्यार तेरे साथ ऐसा ही रहेगा। मैं माता को, आप मेरी माता को वचन बाबा जी दे चुके थे कि आपको बाबा जी ने मुझे कुछ पहले घर से वहाँ से थोड़ी दूर रख दिया था और मेरी माता आई बाबा जी के पास भी हरवंश कहाँ है। बाबा जी थोड़े सख्त बोले भी वो मुझे नहीं पता हरवंश का कहाँ है। तो माता को खून की उल्टी आई, घबरा गई। तो बाबा जी ने उसको वचन दिया भी अगर हरवंश ना मिला तो मैं आपका बेटा बन के सेवा करूँगा। तो बाद में बाबा जी ने मुझे वो ड्यूटी लगाई और मुझे मजबूर होकर घर जाना पड़ा। मैं जाना नहीं चाहता था, परंतु बाबा जी ने वो प्यार का जो मुझे दिया विश्वास, तो मुझे जाना पड़ा, उसको मानना पड़ा। तो इसलिए मैं फिर घर जाके So when Sanji was leaving the place, he gave me darshan and he sat for nearly 5 minutes. I sat with him and he was radiating like Guru Nanak. And for 5 minutes I got that darshan. Then Sanji told me that my seva here is over for now and that I should return to my house. But then I told him that I prefer to die, but I don't want to leave you. I will also come along with you. But then he said, no, you are, be rest assured that how much I care for you and I love you now, I will continue to do that. But right now you have to go back to your mother because I have also given a promise to her. It had so happened in the past that, and I was not aware of this till then. It so happened that once he had given me some seva and sent me somewhere, and my mother had come looking for me. And when she asked Sanji as to where I was, he roughly told her that he's gone out and he's gone somewhere. So she was so worried that she vomited blood at that time. And then Sanji told her that don't get so anxious. I promise you that Harbans will come back to you. And I also promise you that if
Harbans doesn't come, then I will come and be your son. So that is my promise I have given your mother, and therefore you have to follow my instructions and go back to your mother. फिर 77 आरबी उस टाइम बाबा जी ने, मैं जब सेवा बाबा जी के हुनीचक में रहता था ना, बाबा जी को मैं 2 बजे वाली चाय लेके गया था दोपहर को। बाबा जी ने मुझे वचन किया कि मेरे से आप आदमी समझ के प्यार कर लोगे तो आपका बेड़ा पार है और आपके परिवार का भी बहुत फायदा होगा। वो वचन बाबा जी ने मुझे दिया था। वो चोला छोड़ने से 3 महीने पहले हम 16 BS सेवा कर रहे थे, 5 बजे वाली चाय पी रहे थे, बाबा जी कुर्सी पर बैठे थे, हम सारे प्रेमी बैठे थे। बाबा जी ने मुझे बोल दिया भी अपनी निभ गई। वो जो वचन था ना, बाबा जी ने कह दिया कि हमारा प्यार निभ गया। बस इतना मैंने बाबा जी के चरणों में नमस्कार बोल दिया तो बाबा जी ने ये। So I used to give tea to him in the afternoon. So once when I want to give him tea, he told me that Harbans, if you even love me as a human being, and you have that devotion and you love me even as a human being, you will get your salvation and your entire family will also get salvation. So he had told me this. And later in 16 PS, just before he left his body, about 2-3 months before, he called me once and he told me that you have fulfilled your seva, you have done, you have achieved your seva. So I was just wondering at that time, I bowed down to him, and this was about 2-3 months before he passed away. तो बाबा जी जब महाराज चोला छोड़ गए तब कई महीनों के लिए बाबा जी वहाँ से चले गए। 70 भी थे बाबा जी। तो उसके बाद में बाबा जी को किरयाणी रहे। एक प्रेमी ने बाबा जी को, महाराज कृपाल ने कोलंबिया के डॉक्टर मलिनो को अंदर से इशारा किया कि आप मेरा फायदा उठाना चाहते हो तो राजस्थान, इंडिया में राजस्थान में 77 आरबी संत जय सिंह नाम का संत है, उससे आप फायदा उठाओ। तो वो डॉक्टर मिलिनो बुजुर्ग था, उसने दूसरे प्रेमियों को उधर फॉरेनर को कहा भी आप इंडिया में जाओ, राजस्थान में 77 आरबी संत जय सिंह से आप ढूंढ कर उसको बात करो, मिलो। फिर वो बाबा जी के पास आए। So when Kirpal Singh ji left his left his body, Sanji was not meeting people. He went to 77 RB to stay, and after that he went to Kilyawali to stay. And he was not. He was avoiding any people and any meeting any people. So around that time, Dr. Malino from Kirpal Singh ji gave the instructions to Dr. Malino inside that if you want to continue your devotion, you should go to Sanji and you should search this person in Rajasthan. And then Dr. Malino referred to other sevadars, other satsangis in US, and those people came to search for Sanji. बाबा जी उस टाइम 1 साल के लिए प्रेमियों को बोल दिया कि मैं आपको दर्शन नहीं दूंगा, 1 घंटा से शाम को मिला करूंगा। और वो अंग्रेज किसी गंगानगर के प्रेमी को, महाराज कृपाल के सेवक को लेकर 77 आदमी पहुंचे और बाबा जी से मिले। तो बाबा जी ने बोल दिया कि मैं तो 1 साल के लिए अंदर बैठा हूँ, मैं तो बाहर नहीं निकलूंगा। वो कहते हम 1 मिनट नहीं आपको अंदर बैठने देंगे, हमें तो मुश्किल से तो पता चला है। तो बाबा जी फिर बाहर आ गए और उनको सत्संग चालू कर दिया बाबा जी ने। So Sanji used to lock himself in the house and only appear for about 1 hour a day. In the evenings he would come out, and he had instructed that no one should come and meet him, and he had stopped his satsangs also during that time. But when these foreigners they came to Sri Ganganagar, they took the help of one of the sevadars of Kirpal Singh ji, and he brought them to Sanji. And when they came and visited in the evening, then Sanji told them that for 1 year I am not going to come out.
But they said that we are not going to leave you for even 1 minute. So we want your satsang. And then Sanji extended his grace and he started the satsang. उसके बाद 8 साल बाबा जी ने उधर 17 में सत्संग चलाया और ग्रुप अंग्रेजों के आते रहे। फिर फॉरेनर को वहाँ इजाजत नहीं थी, पाकिस्तान का बॉर्डर नजदीक था, तो बाबा जी ने फिर 16 PS आश्रम बना के 80 में बाबा जी ने वहाँ चालू किया। और उस टाइम मेरी बाबा जी ने वो लाइट की सेवा लगाई। वो प्रेमी थे ना, उसको गैस नहीं चलाना आता था, वो उसमें तेल ज़्यादा भरते थे, वो गैस भग भग करके बंद हो जाता था। तो बाबा जी मुझे बोले भी आप गैस तो कोई चला सकते हो? मैं कह जी मुझे पूरी ट्रेनिंग है। तो मैंने बाबा जी को बोला, मैं उनको बोला भी तेल कम डालो, थोड़ा हवा जो उसमें भर जाए तो फिर ठीक है। वो बाबा जी ने फिर मेरी पक्की ड्यूटी 16 PS में अंग्रेजों के कमरों में लालटन रखनी, और जो जहाँ खाना अंग्रेज खाते थे वहाँ गैस रखना। तो मेरी ड्यूटी बाबा जी ने लगातार लगा दी। और उस टाइम से बाद मैं बाबा जी के पास ही रहा सेवा में, 12-13 दिन वो ग्रुप रहता था। बाद में मुझे खेती का भी बाबा जी ने मेरे से काम लेना चालू कर दिया, गरमेल के साथ ट्रैक्टर के जमीन बोने बीजने का। तो लगातार बाबा जी ने मेरे से वो सेवा ली। So Sanji used to give satsangs in 77 RB for some time, but that was very close to, that ashram was very close to the Pakistan border, and for security reasons foreigners were not allowed to come there. So therefore this ashram was relocated to 16 PS, and in 1980 that ashram started. There was no power in those days, so when foreigners came also there was this Petromax lamp that had to be lit for everyone, and people did not know how to light those Petromax lamps. So once Sanji also was trying, and he told me that how do you light this, because I was an expert in getting those Petromax lamps lit. So then I told them that you should not fill the entire thing with kerosene, you should leave some space, and that's how that lamp is lit. And then he told me that this is your seva. So I used to do that seva of light, where I would light those Petromax lamps for in all the rooms and everything. Later he also took seva in the farm from me, and I continued to do seva. अभी तो दूसरे दिन short time भजन में। Okay, now we will sit for meditation. अभी तुम्हारे उनको